Hello everyone. Now we study high order thinking questions based on electrostatics. Based on electrostatics. Let's see time period of simple pendulum in presence of electric field. Now study time period of simple pendulum in presence of external electric field. Electric. Now we study time period of simple pendulum sense of external electric field. काफी अच्छा क्वेश्चन मेंस में भी मैनी टाइम्स पूछा गया है. तो देखिए बेटा, यू नो दैट simple pendulum, a small spherical body is suspended by a string from rigid surface. Spherical body displaced by a small displacement from mean position due to external force. After removal external force, body, simple pendulum, small spherical body moves to and fro about its position. This arrangement is called simple pendulum. Length of string L, mass of small spherical body is also called bob. Under the influence of gravity, the time period of simple pendulum pi under root L upon 2 pi under root L upon. Now, in presence of external electric field, first point, length of string L, mass of bob M, charge on bob Q, gravity, direction of electric field vertically downwards. You know that from basic theory, FTP, final touch points, direction of electric field from positive charge to negative charge means positive charge at tail, negative charge at head. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैंने ये मेंशन किया, बाकी मेंशन नहीं करते हैं. आपके माइंड में होना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस at tail positive charge, at head negative charge. Uniform electric field can be represented by straight parallel equidistance lines. So in your mind, at tail positive charge, at head negative charge, so plus q, a charge plus q placed in electric field, then electrostatic force act on positive charge due to electric field according to physical significance of EFI. At tail positive तो repel करेगा बेटा, at head negative attract करेगा. तो electrostatic force act on positive charge due to electric field alongs to the direction of electric field. At negative charge, negative पर आप देख सकते हैं टेल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा भैया. That's clear. Minus q. So electrostatic force act on negative charge due to electric field. Minus qe opposite to the electric field. That's clear. ये बेसिक थ्योरी था, ये थ्योरी हम यहाँ यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. देखिए, चार्ज ऑन स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, ये मेटेलिक स्फीयर होगा, ऑल्सो कॉल्ड बॉब. क्यू मीन्स पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग्स टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखिए, वेट of bob mg, electrostatic force Q alongs to the direction of electric field. Apparent weight of body, apparent weight
mg dash mg plus qe, mg dash m common plus qe by m, mm cancel, so g dash gravity in presence of external electric field, G plus Q by M. So time period of simple pendulum T is equal to 2 pi under root L upon T dash. So T is equal to 2 pi under root L upon plus by M. तो आप देख सकते हैं इन दिस केस डिनोमिनेटर वैल्यू G plus QE upon M with respect to this result increase, so time period decrease. टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन देखिए बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, मास ऑफ बॉब M, Q चार्ज, ग्रेविटी P, इलेक्ट्रिक फील्ड vertically upwards. Electric field vertically upward. You know that weight force of bob mg, electrostatic force act on positive charge due to electric field along to the direction of electric field. Apparent weight of bob, both are in opposite direction. So apparent weight mg dash mg minus qe means qe subtracting from original weight, taking common m minus by m, cancel, e dash minus by m. That's clear. Now time period of simple pendulum T is equal to 2 pi under root L upon G dash. T is equal to 2 pi L upon minus by M. तो देखिए बेटा डिनोमिनेटर वैल्यू डिक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज. थर्ड ऑप्शन लेंथ, मास, चार्ज, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड. तो देखिए बेटा वेट फोर्स always vertically downward due to gravity, electrostatic force alongs to the direction of electric field. Weight force and QE, electrostatic force, both are mutually perpendicular to each other. The resultant or apparent weight by use of parallelogram law, mg dash, so mg dash square root mg square plus QE square by use of पैरेललोग्राम लॉ. भाई आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा इक्वल टू 90 because mg and qe both are mutually perpendicular to each other. Cos 90 0, r equal to a square plus b square. A square means mg square, b square means qe square, m square common, square plus q square upon m square. M square taking outside from square root m square plus q square e square upon m square. Under root means power 1 by 2. So g dash is equal to square plus q square upon m square whole power 1 by 2. Time period equal to 2 pi under root L upon T dash. So T is equal to 2 pi under root L upon square upon m square whole power 1 by 2. That's clear. Okay बेटा. अब देखिए फोर्थ कंडीशन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, mass M, charge on bob minus q, T. That's clear.
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो देखिए, वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो अपोजिट वर्टिकली अपवर्ड्स alongs to the string। negative sign of charge, negative sign of charge emerged in the direction of electrostatic force, because you know that electric charge is a relative scalar quantity। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन में इंक्लूड हो गया भैया। कहाँ इंक्लूड हो गया? डायरेक्शन में इंक्लूड हो गया। अब देखिए बेटा, नेगेटिव साइन डायरेक्शन में इंक्लूड हो गया, डायरेक्शन में इमर्ज हो गया, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन apparent weight mg dash mg minus qe, because both are in opposite direction. In this condition, q is subtracting from original weight, m common minus qe by m cancel, q dash minus qe by m। तो देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन माइनस पाई एम। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर वैल्यू डिक्रीज हुआ, तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज। फिफ्थ कंडीशन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल, मास एम, चार्ज माइनस क्यू, ग्रेविटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो देखिए, वेट फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, mg and qe both are in same direction। apparent weight mg dash plus qe, m common plus qe by m, mg dash mm cancel dash plus qe by m। तो टाइम पीरियड of simple pendulum t equal to 2 pi under root l upon t dash। तो t equal to pi under root l upon plus by m। तो देखिए, डिनोमिनेटर वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? डिक्रीज। ओके बच्चों, गॉट इट? ओके। अब देखिए, कंडीशन नंबर 6, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, मास m, चार्ज माइनस की, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड। तो देखिए बेटा, वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज opposite to the direction of electric field, mg and qe both are mutually perpendicular to each other। resultant or apparent weight mg dash by use of parallelogram law under root mg square plus qe square, mg dash m square common, square plus q square, square upon m square, mg dash m square plus square e square upon m square whole power 1 by 2, mm cancel, e dash square plus q square e square upon m square whole power 1 by 2। That's clear? The time period of simple pendulum equal to 2 pi under root L upon g dash, t equal to 2 pi under root L upon square plus q square e square upon m square whole power 1 by 2। That's clear? Got it बच्चों? Got it बेटा? Okay, thank you।